हेलो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास के इस क्वेश्चन में हमें दिया है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज एट द ओरिजिन. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट the number of particles on positive x-axis is equal to the number of particles on negative x-axis. Second option says the total mass of the particles on the positive x-axis is same as the total mass on the negative x-axis. The number of particles on the x-axis may be equal to the number of particles on y-axis. And the last option says if there is a particle on positive x-axis, there must be at least one particle on the negative y-axis. So in this situation हमें दिया है that center of mass of the system is at origin. Okay, तो xcm is 0, तो हमें लिखता आएगा m1 x1 plus m2 x2 plus so on upon m1 plus m2 and so on, this is equal to 0. Okay, तो basically हमें यहाँ पे मिल रहा है that m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on, this is equal to 0. ऑप्शन वन बाय वन हम लोग कंसिडर करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों से कहा गया है दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस. अब इस केस में हम लोगों को यहाँ पर ना मासेस की वैल्यू प्रोवाइड की है, ना हम लोगों को बताया गया है दैट द masses are situated at what distances from the origin. Okay, so in this case it is not possible for us to find the center of mass. Okay, तो पहला ऑप्शन इनकंक्लूसिव होता है यहाँ पे. ओके, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में हम लोगों को दिया है दैट द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो हम लोगों को बेसिकली इंटरेस्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से. ओके, अब ऑप्शन में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सम ऑफ मासेस अलोंग positive x-axis is equal to sum of masses along negative x-axis, but this information is not having any direct relation with the relation that we have obtained after taking the center of mass at origin. ठीक है ना, तो this option is also inconclusive, so second option is also not correct. Okay, option third says that the total number of particles on x-axis may be equal to the number of particles on y-axis. So again यहाँ पर बात हो रही है number of particles की. Okay, and this option also is not giving any information about the magnitude of mass and distance of masses from the origin, right? So this option is also not giving any solid conclusion, so therefore we are going to omit it. So the last option, if there is a particle on the positive x-axis, there must be at least one particle on the negative x-axis. तो अब हम मान लेते हैं that there is a particle on the राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस. सो ये हो जाएगा से m1 x1 और देर इज अ पार्टिकल समवेयर on the x-axis. We don't know whether it is on towards right or towards the left of the origin. So we will have the equation m1 x1 plus m2 x2 equals to 0. अब यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं that both m1 and m2 they are greater than 0. Okay, so in this case obviously mass is not negative, so therefore in order to have the sum of m1 x1 and m2 x2 to be 0, we need to have opposite signs of x1 and x2,
which is only possible when one of them is along positive x-axis and another is on the negative x-axis. तभी हमारा आइदर x1 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे x2 निगेटिव हो जाएगा, और वाइस वर्सा, कैसे भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द फोर्थ ऑप्शन is correct in this case. Okay, I hope everyone has understood this.